Hello, good morning everybody. My name is Vishvadeep and I welcome you all on Unacademy's computer science channel. You all know that it is very important time for all of you if you are preparing for GATE 21. So here I am to help you guys. If you have any kind of query, question, problem regarding your preparation, regarding whatever the course is left, what to cover, what not to, how to cover and anything, then you can ask those questions to me. Before I start the session, let me introduce myself. My name is Vishvadeep. I am working as a leader in Unacademy computer science team for brands and content sales team. I have written the GATE exam multiple times. 19, 119, 440 and 682 are few of the ranks. Went for my masters to IISc Bangalore, another masters from BITS Pilani. These are the courses I am taking on Unacademy's platform. A rich experience in teaching I am having. All these are the credentials. These are in one side, but the motive of being here, being an educator is very simple, and that is we want to provide the quality education available to each and every engineering student, each and every student from Unacademy's side. So we are trying to do that particular thing by doing lot through our YouTube channel, through our platform unacademy.com or Unacademy app. You also can get benefited out of that if you want to. If you want my free classes, you can go to unacademy.com or you can download the Unacademy app and then search my profile Vishvadeep. Follow my profile over there. You'll be getting free content unlocked if you use the code VDEEP10. If you are the first time user, you can unlock all the free content using this particular code VDEEP10. And over my profile you will be getting special classes. These are free classes. You can learn lot from these special free classes. Okay, now it's time for you guys to ask the question. If you are facing a problem in your preparation, you can ask the question. If you are facing the problem in your preparation, in your planning, in your strategy, you can ask any kind of question to me so that I can reply and I can answer for those questions. Any kind of question, any doubt. Yesterday only the GATE committee, IIT Bombay, this time they are conducting the GATE exam, so they have published a particular plan. What is the plan? Plan is the GATE exam dates. So you're gonna do what? You're gonna prepare based on that particular case. Okay, Abhi Singh says, please explain strong and weak entity set. Entity set can be strong or can be weak. Is that so? Or we have the relationship strong and weak. Just think of that, Abhi Singh, once. क्या एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं या रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं? जस्ट चेक आउट वंस. सेकेंड ईयर स्ट्रेटेजी. देखिए सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, इफ यू आर इन द सेकेंड ईयर, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी यू नीड टू अप्लाई. यू टेक वन कोर्स विच इज द इजीएस्ट वन. लेट्स से यू आर starting with engineering mathematics or maybe C programming or maybe data structure or digital logic. These are the four courses you can start with. You start with these courses, one of these courses, complete the theory. Then after that you go for the practice. So once you start, suppose let's say you have started C language. So in the C language, once you start studying a topic, one topic, basics of C language you have studied, suppose syntax, variable creation and all these things you have studied. Now you solve the questions based on it. All the practice questions available with you on that topic you solve immediately after studying that topic. And after that, all the GATE previous year question also or all other exam previous year question also you solve immediately. Once one topic is done, go for the next topic and then next topic and then next topic. That's how you will cover up one complete subject. Once a subject is done, revise entire subject and whatever the questions you have solved, just check out that what are their solution approach. You don't have to solve those questions again, but just check out. In that case, one subject will be completed thoroughly. Once a subject is done, maybe it may take you to cover up one subject 1.5 months, no problem.
but cover it completely. पूरा complete करना है. Then go for the next. Like this you will cover up, but don't take much time. Don't give lot of delay between the courses. If you are covering one particular course in 1.5 months, it's fine. 1 year or 1.5 year will be enough to cover up all the courses. Initially it will take little bit longer time for you to understand the procedure and solving the problem and all. Slowly you will be in the particular zone to understand quickly, to solve the questions quickly, and you will definitely be able to finish a course maybe within 20 days, 30 days or 15 days itself. Okay, so I am taking the questions one by one. How to develop habit of question practices. See, it's very simple, Anubhav. To develop the habit, you need to develop the interest. If you have the interest in a subject, in a topic, in problem solving, definitely you will enjoy the process. I loved when I was solving the GATE questions. I loved solving the puzzles, and I take GATE question like a puzzle only, technical kind of puzzle. So you take interest in understanding the topic more, automatically the question solution will be your habit. I have completed all subjects. I wrote a full length, couldn't even qualify cutoff, help me. Akash Chaudhary. Look at this, Akash. It's very simple case. If you have completed all the subjects but still you are lacking, then there are so many other qualities you will require to get the top rank. Yesterday also I talked about this. Today also I am talking about this. I am going to deliver a complete session on this point, that why not covering entire syllabus will ensure that you will be in the top rankers of GATE. Not only the covering syllabus is required, you will require more other quality, and what those qualities are and how to improve those, I am going to deliver a particular session, complete session on this point. I will talk about what are the quality required and how you can improve those qualities. Both the things I am going to talk about, and that particular session is going to happen tomorrow, Sunday, 10 p.m. So stay there, come there live and learn there how exactly you can target the GATE exam or other qualification exam which are very tough in case of the technical knowledge or in case of the quality of the exam. So just come tomorrow in the evening, 10 p.m. and I will tell you that how you can improve those things. Next is, if I study DBMS on this Unacademy channel, will I be able to score good marks in university exam as well? Yes, Abhi, definitely you can. See, here we are providing lots of university exam preparation also. You can check out the playlist here. You can definitely go through those playlists. Apart from that, Abhi Singh, okay, you do one thing, you download the Unacademy app. Okay, and then once you download the Unacademy app and create your account, to unlock the free content, you can use this particular code VDEEP10, VDEEP10. This particular code will unlock the free content on Unacademy's platform. We have a particular educator. His name is Ankush Saklecha. He has just started. He is one of my team member. He has just started the DBMS on Unacademy free special classes. Yes, free classes, special classes. Go check out his lectures. He will be definitely helping you in your DBMS semester exam preparation. Okay. Now, next question is from direct PhD college list. DK, all the big IITs and IISc will allow you to have direct PhD. सारे के सारे बड़े colleges direct PhD allow करते हैं. All the big IITs and NITs and IISc will allow you to go for direct PhD, but you need to read the norms of each and every college. Might possible you may or you should have some kind of research background before you opt for direct PhD. Might possible they will take a really rigorous interview for your direct PhD. If you have that particular qualification, definitely nobody can stop you to take admission in PhD directly. You can save a lot of time in that particular case if you are going directly for PhD, apart from not going for masters and then PhD. Sequence bata do sir for first year.
गेट सीएस का व्हेन सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन आर्या, मैंने कहा है आपको, आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाएं, कोई भी, चाहे डिजिटल लॉजिक है या इंजीनियरिंग मैथ है या फिर सी प्रोग्रामिंग है, ये तीन बहुत बेसिक से कोर्सेस हैं। एक टॉपिक लें, उसका सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ें, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करें। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाता है, ऐसे ही एक एक टॉपिक आपको करना है। अब कौन सा टॉपिक पहले लें, ये आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बताएगा। जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ें, तो सबसे पहले आप पढ़ें डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक्स की, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड सो ऑन। फिर आप पढ़ेंगे एरे, फिर लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, क्यू, फिर आप जाएंगे ट्री पे, फिर ग्राफ पे एंड देन हैशिंग एंड ऑल। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज आप सारे सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में पढ़ें। सीक्वेंस आप स्टार्ट करें 3 सब्जेक्ट से पहले, या तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर मैथमेटिक्स से, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग से। आफ्टर दैट यू कैन जंप टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कोर्सेस लाइक सीओए, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एंड देन यू कैन गो फॉर डिस्क्रीट मैथ, और फिर बचे हुए कोर्सेस आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डीबीएमएस और एप्टीट्यूड पेंडिंग है, अभी रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किया, अभी कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। लुक एट दिस, बहुत सिंपल सा केस है बड़ी। आप अपना टाइम 70% 30% में डिवाइड करें, 70% फॉर रिवीजन, 30% फॉर न्यू थिंग्स। जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स अब बचे हुए हैं, उन टॉपिक्स में से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़िए, क्योंकि अब आपको टारगेट करना है कि आप कितना टाइम स्पेंड करें कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। और नए टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो जो पहले आप पढ़ चुके हैं वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया तो कोई काम नहीं आएगा वो जो इतना मेहनत किया आपने। तो जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर 70-80% कर चुके हो तो उसको अच्छे से रिवाइज करो और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना एग्जाम में। नया जो छूटा हुआ है उसको सिर्फ उतना ही पढ़ो, छोड़ दो थोड़ा। देखिए आपको गेट एग्जाम में सिर्फ 70 मार्क्स लाना है तो आपको हाईएस्ट रैंक मिल जाएगी। 70 मार्क्स के लिए आपको 50 to 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। डेफिनेटली 10 to 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। छूट रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उन टॉपिक से भी छूट सकते हैं जो आपने छोड़े हैं, या उन टॉपिक से भी छूट सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं ज्यादा, राइट। बट जितना आता है उसको अच्छे से करके जाओ ताकि उसको टारगेट कर पाओ, और कोशिश करो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान रखें जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं। आप हर टॉपिक को उतना ज्यादा अब रिस्पेक्ट ना दो, जस्ट बिकॉज एवरी टॉपिक विल नॉट बी आस्क्ड फॉर मैक्सिमम मार्क्स। हाउ आई फाइंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट इन फ्री। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हमारे पास हैं अनअकैडमी की साइट पे। आप क्रैक गेट ईएसी के एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो विच इज फ्री ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने और मेरे फेलो एजुकेटर ने बनाया है, जिनमें ऑलमोस्ट आपको 20+ टेस्ट मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, कुछ मॉक्स भी हैं, और वो सारे फ्री हैं और बहुत क्वालिटी टेस्ट हैं। बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस दे रखे हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट में, आप जाके देखिए जरूर। नाम से अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, विश्वदीप एंड मल्लेशम सर का एक टेस्ट सीरीज है जो आपको मिल जाएगा अनअकैडमी की साइट पे फ्री में। अगर नहीं मिलता है तो यू कैन आस्क मी ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म एज अ मैसेज टू एजुकेटर, आई विल सेंड द लिंक ओवर देयर। Sir, I am in 12th class. What video I want to see for CSE? Okay, so if you want to learn computer science, you can start with 2 things. One is programming language, which is the basic most C language. And the second thing you can start learning is digital electronics. And next thing you will learn is data structure. If you will learn these 3 things, you will get to know that what exactly the computer science starts with. 3 subjects: C language, programming language, second one is digital electronics, and the third one is the data structure. These are the 3 things which will give you a glimpse of computer science. What are the subjects that I can emphasize this year the most to score max? See, it's not year or this year I will have to emphasize or something. See, it's very simple thing. The courses which are having more weightage like mathematics, aptitude,
like data structure programming algo, like TOC compiler, like COA digital. These are the courses which are having maximum weightage. Now OS is having 8 to 10, then CN is having some 6 to 8, then DBMS is having some 7-8 marks weightage. So these individual subjects, instead of emphasizing on subject, you emphasize on topics. Like if somebody will ask me, sir, CO ab bacha hua hai or 1 month is only remaining, what should I do? I will tell them, just study cache memory and pipeline. You can score maximum in the GATE exam. Of course, you will not be able to score 100% from COA, but you can score maximum. So it's very simple. Every subject has some important topics. Concentrate on those instead of concentrating on entire subject. What was the straight of general aptitude and engineering math? See, Arya, it's very different scenarios. Both are very different. Engineering math is different, aptitude is different. Aptitude is like you need to solve aptitude for next 1 year or 2 year almost every week, 1 hour, 2 hour, 3 hours, so that you can improve your problem solving. Aptitude should or must go on continuously. Sir, I am getting 50% marks only in Medici topic wise test and getting 50 marks. What should I do? Yash Yadav, if you have covered all the topics, all the subjects, if you have studied, if you understood everything, then you just try to analyze your test series, that why you are not getting the marks. Some questions you will not be able to score just because you don't remember. Some question you will not be able to get the marks because you don't know how to solve. So if you don't remember, that is the problem for some question. Try to remember those topics. Other than that, the other thing, if you are having that problem that you can't solve the question, then you need to improve your problem solving. If you know everything and you are not able to find out that what's your problem in gaining more marks, then tomorrow 10 p.m. I am going to hold a particular session. In that session, I am going to tell you that how exactly not only covering the exam or exam syllabus is enough for cracking the GATE. Tomorrow 10 p.m. Sunday 10 p.m. come live and you will understand that why not only covering the syllabus is enough for GATE top rank. I will explain the problems and solutions both. How to improve speed and accuracy. For that you need to remember every single topic. It's every single detail on your tip of the mind. If somebody asks you what's your birth date, immediately you can say, sir, this is my birth date. Why? Just because you have used that particular date multiple times, it is there in your tip of the mind, right? Somebody asks you what's your name, you can immediately answer. Similarly, you need to have that particular answer ready for every single topic. If you can do that, definitely you will be having a good accuracy. First, speed and accuracy, definitely you will be having. Some tips to score full marks in math and aptitude. There is no any tip which can work in math and aptitude. It's all about practice and your problem solving ability. If you solve more and more aptitude questions, math questions, you will be definitely getting more and more marks. Very simple. Math or aptitude, it's all practice, nothing else. How you keep yourself always motivated, energetic? I sometimes feel low on motivation. Kamal, it's very simple thing. If you want to motivate yourself, remind yourself your goal. Why you started preparing for some competitive exam. अपने आप को वो याद दिलाते रहो. And you will always feel motivated. How you can remind it again and again? By having your mobile phone's wallpaper of your dream. If you suppose love a particular car and you want that particular car in your garage, then you can have that particular car in your wallpaper. If somebody inspire you a lot, then take a poster of that fellow and just paste it on your wall. See that fellow and then again and again recall that why you started preparing for GATE. If you can remember that first day, definitely you'll be having high energy every day. How to improve accuracy? Accuracy can be improved very easily if you concentrate.
if your concentration is good, definitely accuracy will be more. Just because most of the students don't understand that question में पूछा क्या है, try to understand the requirement of the question, try to understand what they are asking, based on that you solve the question, and if your concentration is good enough, definitely you can improve the accuracy. Other than that, to improve the accuracy, you need to have the correct knowledge of subject. If you have some incorrect knowledge, or if you have incorrect understanding of the topic, then definitely you will not be getting the answer accurate. सर क्या एक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है स्कोरिंग गेट रैंक अंडर 100 बिकॉज ऑल टॉपर्स टेक 2-3 सीरीज? सर आई हैव टेकन ओनली वन एंड नॉट कंप्लीटेड इट फुल्ली, शुड आई गो फॉर वन मोर? ऋषिकेश, आपको सारे टेस्ट लिखना है. अगर एक टेस्ट सीरीज के ही सारे टेस्ट नहीं लिख रहे हो आप या नहीं लिख पा रहे हो आप, तो हाउ यू विल राइट द टेस्ट ऑफ अदर टेस्ट सीरीज टू? You need to write the test as much as possible. If you talk about, or if you talk to any topper, that topper will always say that the 60% is classroom training, 40% is your test series which helps you in your gate preparation. Why? Just because it teaches you that how you manage the time, it teaches you how you manage a new question, it teaches you how you can remember the topics, how you can recall the topic quickly. There are lots of other small things which are taught to you by test series. So write every single test you have access on. Otherwise, definitely you will not succeed with your intended rank. कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे अभी भी, तो 65 आ सकते हैं. ऑल द मेंबर्स हु आर राइटिंग द टेस्ट सीरीज, they have covered entire syllabus and still not getting enough marks. Don't worry, tomorrow I am going to have a session. What time? 10 p.m. About what the session is, why not covering the syllabus is enough for top gate rank. Tomorrow you come into that particular session, I will explain you what is the problem and what is the solution, so that you can map that what is your problem among all those and how you can improve those. Sir, GATE CS after BCA, please give your suggestion. After BCA or whatever engineering, it's just that if engineering student will have to put 1x amount of efforts, then you need to put 1.2x, just because you don't have the basic knowledge of the topics. Not at all worry about. You don't have to worry about that particular thing. You can do it. कोई भी हो, चाहे BCA, MCA आपने किया हो या फिर BTech किया हो, doesn't matter. If you want to learn something, you can learn something. You just start with the basic courses, learn it properly. I am not saying study it, learn it. Learning और study में बहुत difference होता है, ये आपको पता होता है क्या है. आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं, लर्निंग नहीं. तो लर्न करो, सीखो, हर चीज को प्रॉपरली सीखो, गाइडेड स्टडी रखो. अगर आपको गाइडेड स्टडी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको गाइडेड स्टडी मिल सकती है. कुछ दिन पहले बहुत अच्छा सा एक कोट मैंने कहीं तो पढ़ा किसी के इंटरव्यू में, और बहुत अच्छा था कि पहले क्या हुआ करता था कि छोटी सिटी के लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, जस्ट बिकॉज उन्हें गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता था. और सेम चीज जो है, बड़ी सिटी के लोग बहुत आसानी से आगे तक पहुंच सकते थे, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला, उन्हें आगे की अपॉर्चुनिटी बताने वाला होता था. क्योंकि गाइडेंस बहुत बहुत जरूरी है. अगर आप अपना एफर्ट्स लगाते हो और गलत डायरेक्शन में लगाते हो, या सही एफर्ट्स सही तरीके से नहीं लगाते हो, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं. तो अगर आप किसी भी बड़ी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें, यू शुड हैव अ प्रॉपर गाइडेड स्टडी, जिससे कि आपको पता चले कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना हो. अदरवाइज आप अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करेंगे काफी ज्यादा, एंड विच विल डेफिनेटली लीड यू टू हैव डिमोटिवेटेड फील. क्योंकि हमने इतना टाइम वेस्ट किया, हमने इतना टाइम स्पेंड किया. आपको ऐसा लगेगा हमने स्पेंड किया, बट दैट इज एक्चुअली नॉट टू मच प्रोडक्टिव वर्क यू आर डूइंग. तो कोशिश करें कि गाइडेड स्टडी आपको मिले, क्योंकि अब अनअकैडमी जो है आपको आपके घर पे गाइडेड स्टडी प्रोवाइड कर सकता है और कर रहा है. तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप गाइडेड स्टडी
ले पाए अपने घर बैठे बैठे, आपको कोई खर्चा नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, आपको घर का खाना मिलेगा, सब कुछ वही का वही, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप गाइडेड स्टडीज से अपनी प्रिपरेशन करें, डेफिनेटली आपका ज्यादा फायदा होगा. I am the first year of CS. How to prepare for GATE? Kamalpreet, it's very simple. आप बेसिक मैथमेटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक को कवर करने की कोशिश करो फर्स्ट ईयर में. आराम से थोड़ा थोड़ा करके लर्निंग रखो. जब गेट के कोर्सेस आपके सेमेस्टर में आएंगे तब आप सेमेस्टर लेवल के ऊपर गेट लेवल तक की उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो, और साथ ही साथ जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तब कोई एक गाइडेड स्टडी ज्वाइन करके और डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा डिटेल में स्टार्ट करो, ताकि आपको थर्ड ईयर तक आते आते इतना ज्यादा नॉलेज और इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो जाए टॉपिक्स की कि आप गेट इजीली क्रैक कर पाओ विद द टॉप रैंक. सर कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू होता है क्या आईआईटी आफ्टर गेट? इफ गेट मार्क गुड, गेट मार्क्स अगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, नहीं तो आपको इंटरव्यू देना होता है, और उन इंटरव्यू में जो आप गेट के लिए पढ़ते हैं उतना सम प्रोग्रामिंग, सम मैथमेटिक्स और कुछ पजल्स भी पूछी जा सकती हैं. इंटरव्यू कभी कभी हो सकता है. हाउ टू रिवाइज सीओए? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट 22. सर सीओए के लिए मैंने अभी लास्ट वीक एक पूरा सीरीज लॉन्च किया था फ्री में. जी हां, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे जाके आप देखिए, मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको मिलेगा सीओए का सीरीज. नहीं मिलता है तो मुझे एक बार मैसेज जरूर करें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको बताऊंगा, लिंक दे दूंगा. सारी सीओए का सीरीज मैंने इस तरीके से बनाया था, पहले थियरी, फिर उसके सारे प्रॉब्लम्स, फिर थियरी, फिर प्रॉब्लम्स, फिर थियरी, फिर प्रॉब्लम्स, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए उन सेशंस में. अभी भी दो सेशंस मतलब दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, आईओ ऑर्गेनाइजेशन और पाइपलाइन, जो कि होने वाले हैं मंडे और ट्यूसडे को 12 PM एंड 3:30 PM. आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस पे उन क्लासेस को. गेट आफ्टर सीएस बीसीए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. विच टाइप ऑफ पजल टू सॉल्व? बहुत सारी पजल्स होती हैं, आप पजल टू पजल बुक उठा के देख सकते हैं, दो अलग अलग बुक्स हैं, सॉल्व करिए उनको. आपको ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स मिलेंगे जहां पे बेसिक पजल्स होती हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कुछ आपके टाइम डिस्टेंस और रेगुलर लाइफ के रेगुलर रूटीन से रिलेटेड. तो वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करो. एक हैबिट ही बना लो कि आधे घंटे आपको पजल सॉल्व करना है, किसी भी टाइप का. कोई पजल गेम डाउनलोड कर लो अपनी फोन में और एक हैबिट बना लो 15 मिनट्स 20 मिनट्स को आपको उस गेम को खेलना है. बट पजल गेम मतलब पजल गेम क्रिकेट नहीं खेलने लग जाना, नहीं हम फीफा खेल रहे हैं सर, हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं. ठीक है, कोशिश करें पजल सॉल्व करने की, क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है. What was preparation straight for general aptitude engineering mathematics? Is in start first or last parallel with CS core courses? आप अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो पहले इंजीनियरिंग मैथ पढ़ लीजिए अच्छे से, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली वो बाकी के सारे कोर्सेस में हेल्प करेगा. एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ अगर आप पहले भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं तो आप पैरेलल करते रहें, एक कोर्स सब्जेक्ट आपका कोर और दूसरा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पैरेलल में चलने दीजिए 80-20 के रेशियो में. 80% आपका टाइम कोर सब्जेक्ट के लिए, 20% मैथ के लिए. आप 2 महीने 3 महीने में पूरा मैथ और उसके बाद एप्टीट्यूड कवर कर लीजिए तो भी काम हो जाएगा. आई एम गेटिंग 30 to 40 marks only in fit even after rectifying mistakes. How to improve my score? So Kusumlata, it's very simple that you will have to improve your problem solving. If you have rectified what are the problems, definitely you should improvise it. If you are not able to improvise it, then let me know what are your problems in one of the sessions where we can have such kind of things. Okay, so I will try to maybe have a session. If not, then you can go for iconic subscription of Unacademy, where we provide a coach, one-to-one coach to everybody, so that you can solve such kind of problems with the help of them. If not, then at least take help of some expert, where the expert can understand what is your problem, why that problem is, and you can solve those problems easily then based on that. How to prepare for verbal part? Aditya Verma, on this particular channel we are having verbal
and English classes started yesterday only. Yes, on Friday only, Meeta ma'am started her classes for verbal and aptitude. That particular class, Monday to Friday, going to happen 12 p.m. Okay, yes, 12 p.m. Monday to Friday. You just go and check out that particular class. You will learn a lot from there. Is it good to make a table for revision? I mean, whenever I complete one subject, then I mark. Yes, Shubham, it's a good idea. It gives you a lot of confidence that so many ticks are there, and it gives you so much motivation that okay, 3 tick bache hain, 4 tick bache hain, let's do it, and so on. All the members who are here and getting less marks, don't worry. I am going to have a particular session tomorrow for all of you. Yaad rakhein, tomorrow I am going to have a session for all of you. That particular session is at 10 p.m. and this session is why not covering the GATE syllabus is enough. Tomorrow 10 p.m. Come live and understand what's the problem you are facing, among what are the problems are there through which people don't get the marks in the test series. How to revise subjects properly? Simple. Take a subject, read the content, remind yourself that yes, you have studied this content and now you remember that content, and after that, whatever the problems you have solved, check out those problems, how you solved. Among those problems, 2 or 3 problems you can solve also, so that you can understand, अच्छा मुझसे बन रहा है question, I am able to solve those questions, and then go for the next topic. Similarly, after each and every small topic, you can just close your eyes and just remind that okay, in this topic I have studied this, so that you can have a specific revision in your mind also, that you remember or not. Like that way you can revise. One more thing for all the revision strategies, start with your easiest course in your revision, so that if you don't revise that particular course for 30-20 days also, then too you will be able to remember. The toughest course you revise at the end, so that you can remember those during the exam also. How to utilize video lecture in best manner and what is active learning? See, video lecture को utilize करने के लिए best तरीका है कि learn the subjects live. Otherwise, the learning will not be that much effective. That is my own experience. Learn everything live. If whether it is free content or paid content, whatever, try to become regular, consistent in every subject. And then whichever subject is going on, every time teacher will tell you these questions you can solve, those questions you can solve immediately. As soon as you finish the lecture, immediately within half an hour, solve all those questions which are based on the today's topic. You will be having really great clarity about the subject. Sir, sometimes I am scoring great and sometimes the score dips below. No. See, Abhirup, it's quite a normal procedure. Sometimes more questions have been asked from those topics which you are able to solve, and sometimes more questions are asked from those topics. Either you are weaker in those topics or you didn't study those topics at all. So try to understand each and every test. If you are having more marks, why? If you are having less marks, why? Analyze it, and based on that you understand that okay, less marks just because of these are topic are there and I could not understand these topics, or I could not solve those questions on these topics. Revise those, rectify the problem, and you can of course score more in every test series. How many questions we can expect from COA this year for ECE? I am expecting around 4 marks question from the COA ECE, and I am expecting that definitely one question will come from pipeline chapter. Sir, I am third year student. How score more in last months? See, third year students are having a really great opportunity this year, just because they can write the exam which can be which can be like without any pressure. So just go enjoy the procedure of writing the exam. You can understand that how you will feel during the exam. If you want to score more, try to focus on the exam.
not on the syllabus. See, syllabus coverage is only required for regular test. If you want to score 70% marks, 70% marks are asked from just 60% syllabus. If you cover 60% syllabus perfectly, then too you can score this much, but that perfectly means you need to able to solve all the questions from that 60% syllabus. Mark those topics which are most important and revise those again and again and again, so that you can solve more questions in the GATE exam. सब्जेक्ट्स टू फोकस फॉर स्कोरिंग, सब्जेक्ट्स, सी सारे सब्जेक्ट्स फोकस करने हैं आपको, सब्जेक्ट के टॉपिक अब डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेटर टू focus on a subject, focus on a subject's topic. You can leave few topics from each subject just because the probability of being asked a question in that particular topic is very less. So instead of focusing on a course, focus on the topic and definitely it can help you more. I have seen your COA lectures. That was brilliant. Thank you so much, Jay Yadav. Thank you. Please share the playlist with all of your friends also, so that they also can learn a lot. I am first year BCA student and I want to go for ethical hacking. Aap Utkarsh, you can go for the web security domain. So there are so many MTechs still going on in lots of colleges, and you can learn first of all web security. Once you will learn web security, definitely you will be learning in that what is the ethical hacking and how you can do it. सर मैं ईसी का हूं, आईआईटी के इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के कैसे क्वेश्चन होंगे? कुशल, ओके, सो इफ see, the thing is, mostly IIT's admission, the MTech admission will be based on your technical knowledge. Most of the time, 90 to 95% time, they'll be asking questions on your technical understanding of the courses, whatever the basic courses you have. Sometimes they will ask your preference also, that which subject you have prepared more. So one subject you prepared thoroughly, that every type of question you will be able to answer. Apart from that, mathematics they'll be asking. Apart from that, some aptitude or puzzle also they may ask. But this particular project will be asked only when you will be going for the research courses. Like if you are going for MSc engineering or like MTech by research or something, MS course or PhD course, then only your projects will be asked. So projects should be in the kind of a research domain. If you have such kind of projects, then definitely they'll be asking the question, what is the project, what you did, and then based on that different questions can be asked. सर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें और क्या क्या करें? अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं आपको प्लेसमेंट के लिए अलग से ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ 2 दिन की प्रिपरेशन लगेगी. वो है एक दिन आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिखने में, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको लिखने में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टाइप के क्वेश्चन बनाने में, और दूसरा है कुछ अलग टाइप की पजल जो बहुत रेगुलर है HR टाइप के इंटरव्यूज में या इंटरव्यूज में, उनको पढ़ने की. बाकी आपको क्या प्रिपरेशन करनी है? सी लैंग्वेज वो ऑलरेडी गेट के सिलेबस में है. आपको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग एंड ऑल ऑलरेडी गेट के सिलेबस में है. आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, वो भी गेट के सिलेबस में है. कुछ भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा. What are the benefits for EWS category as cutoff are same for both? Tirth, I cannot say anything on this just because it totally depends on how many number of candidates are giving the exam from different categories and how much they are scoring. So if they are scoring equal, then definitely it's not at all a good idea to have EWS category or whatever the general category. But if EWS category members are getting less marks or cutoff is little less, you can get benefited out of it. It totally depends how many marks the people of different categories getting. I am going to 4th semester. Is it right to start preparing YouTube Unacademy video sufficient for it? Abhishek, everything is sufficient on online. The only thing is if you will not have a guided study, then you will waste lot of time. That's the only problem is there in the free learning कि आपको पता नहीं है कि कब कितना कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने करने हैं और किस टाइम पे क्या नहीं करना है.
If you will be able to rectify that, if you will be able to understand ki, okay, this source is good for this subject, this source is good for this subject, enough or not enough, of course you will be able to do that. On my channel I am trying to provide you every single possible content, but one more thing, how to utilize that particular content. We can help you lot of time, but most of the time you will be struggling with your problems, your doubts, and lots of other things. So if you really are interested in GATE preparation, go for a guided study. That will definitely help you more. If you can join, definitely join Unacademy Plus or Iconic subscription, and definitely you will have more benefit out of it apart from learning from free sources. If you want still to go with the free sources only, there are each and every free source available on my channel. Placement versus MTech through GATE being study in third tier college depends on that what is your aim in the life. If you are a good student, really topper student, and if you can grab some 10-15 lakh package from your BTech itself, it's fine, no problem. But if you are not able to grab that, then you go for masters, prepare hard for GATE and go for masters. In the masters, people are getting 30 plus package also, around average is around 20 lakhs in the IITs and IISc. So you can go for masters, get more package. Apart from the package, the amount of or the quality of work you'll be getting in the IITs, that will be even better. Just because after IITs, wherever you'll be going in the companies will provide you better work as compared to the BTech hired students. I'm learning C programming from Deva sir. Is it best for the question solving? But I am not able to write code. It's hard when I do practice thing. What to do now? Whatever programming, learning the program is an art. Learning to program is an art, and which is not at all easy until you write at least 100-200 codes by yourself. Try to understand each and every simple problems. After that, try to implement those by yourself. And after that, take out some more problems based on the same problems, and then try to implement those by yourself. Until you practice, you can't learn how to program. That is one of the biggest problem in computer science students nowadays. They just remember some of the basic problems and they say that yes, I know how to code, which is not at all an easy task for you guys. But just because, or it's not a good thing for you guys, just because you will face a lot of problem when you will go into the industry, or when you will try to give the really great interview in the good companies. Try to improve your problem solving in the coding by taking some kind of a guided study, or maybe taking some kind of a coding classes or something. Okay. How to make single revision page for all subjects? Arya, you don't have to do that. One subject, 3-4 page short notes will be really good. Just because you can write almost those kind of things which you need to remember as it is. 1 page or 2 page or maybe 3 page, one subject will be really good idea, instead of writing everything on single page. Does the low CGPA in graduation affect MTech placement in old IIT, IISc? If your CGPA is around 6 plus, then that will not be a big problem. 6 plus or 7 plus will be fine. If you have lower than that, sometimes even in MTech admission also you may face the problem, but some companies only will have that criteria to have the CGPA overall from your BTech to MTech 6 plus or 7 plus. Those are the top companies. Other companies may allow you and can give you more money if you are really enough in or good enough in your MTech. If your project is good, if MTech marks are good in the interview, if you performed really very well, extraordinary, definitely that particular thing can be ignored. So during the revision, what should I do? I mean, one revised note to solve PYQs, 3 test series for every subject, or directly after notes revision go for test series. If you haven't solved the PYQs, first solve that, and after that only you write the test. That will be helpful more. Can I still get good rank in third year? I am second year. I know basics of programming, digital, and bit of engineering, mathematics. Kunjal, if you are in second year and if you are targeting third year GATE exam, of course in 1 year you can prepare hard and you can crack
a GATE exam with highest rank. With just 6 month preparation, I could score in my third year 682 all India. Yes, that's true. I started my preparation around mid August, and February first week I have written the GATE exam very first time. Before that I knew only one subject, which was C language. Apart from that, I have studied data structure in my regular college time. I was not good enough in digital, I was not good enough in mathematics, I was not good enough in aptitude also, but somehow I prepared. The guided study I had along with one of my professor, and he helped me a lot in 6-7 months, and I could score really well. Even though there were few courses which were not there in my syllabus also, like in my exam syllabus, my engineering syllabus, I had DBMS, TOC, I had ADA, I had OS in that semester only. Along with the semester preparation I was doing that. So first time I studied few of the courses, still I could score more, just because I was good enough to understand that how to score more, how to target an exam. Of course, I was not good enough. My teacher was good enough to tell me how to guide me, that how you will target the exam, and we could do it. I am getting 50 plus marks, but how to improve it? Vesh, you just come tomorrow live 10 p.m. on the same channel. I will tell you how you can improve on your current knowledge. If you have knowledge of all the subjects but still not getting highest marks, I will tell you what are the problems you are facing and how to improve those. When Unacademy new session start? Unacademy's new session is going to start very soon, but on Unacademy next week onwards, from 16th and 17th of December, 3 new subjects are going to start, which is COA I will teach, TOC Malesham sir will teach, and algorithm, which will be taught by Ankush Saklecha sir. So if you want to join any of these courses, and if you want to join for Unacademy Plus, join as soon as possible so that you can be the part of these courses. Remember, you need to use a particular code to take the subscription, and the code is VDEEP10. VDEEP10 code will give you lots of benefits, including the discount plus my mentorship. So last year I was having rank 6500, still didn't revise 4 subjects, 2 months. What should I do now onwards? See, Durgesh, you can do one thing which is very simple. Just revise all the subjects. Revision should be important, otherwise you will not be able to remember the topics on the tip of your mind. Quickly recalling the topic is must required. For that, revision is must. So revise and write the test along with that. Writing the test definitely will help you. Okay, there are so many questions. What is the biggest mistake during your preparation time? Biggest mistake is people only focus on syllabus ki ye cover ho gaya, ye cover ho gaya, ye cover ho gaya, done. They don't improve them. You are totally dependent on one thing. सर आप तो बस कवर करा दो फिर देख लेंगे. ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, जितना याद हुआ लिख दिया और मार्क्स मिल गए. This is GATE exam. So biggest mistake is the students only think about one thing, which is covering the syllabus. That's why I am going to have that particular session tomorrow for all those members who still feel that okay, my syllabus is covered, means I am assured I will definitely get 100 marks or 100 rank. Not at all possible. GATE exam is very different. That's why I always tell you every single time, guided study is more important. Why? Just because we exactly know that how you will solve the questions in GATE exam, what are the other qualities required to crack the GATE exam. That's why I tell always, guided study is always necessary for cracking the GATE exam. Okay, another question. Which is a scoring subject in CSE are for you? If you are in first year itself, you have 100% courses important, and you are going to cover every single course in every single detailed manner, just because you have enough time. If you don't have enough time, then only it will be a good idea to leave something and to start with something. Sir, object oriented programming padha do please.
जय यादव, आपके जो पर्टिकुलर सेमेस्टर के कोर्सेस हैं वो भी हम बहुत बहुत जल्दी लेके आएंगे, इंक्लूडिंग दोज कोर्सेस विच आर नॉट देयर इन गेट सिलेबस 2, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। हम जैसे ही कुछ सेमेस्टर कोर्सेस खत्म करेंगे, आपके सारे जो इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं जिनमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, लाइक एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो हर सेमेस्टर में या हर हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली वी विल ब्रिंग सम सेशंस ऑन दोस। सर सीओए लेक्चर्स का वीडियो लिंक, ओके, आप एक काम कीजिए, आप इस पर्टिकुलर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सेम चैनल अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा वहां पे इजीली मेरे सब्जेक्ट का सीओए का प्लेलिस्ट। 53 लेक्चर्स हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो क्योंकि कुछ मैराथन सेशन भी हैं। आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देखो, उस प्लेलिस्ट से सब कुछ मिल जाएगा। आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर, हाउ कैन आई स्टार्ट फॉर गेट, प्लीज सजेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर में 3 कोर्सेस आपको फोकस करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड सी प्रोग्रामिंग। इनको अच्छा करें, इस लेवल का करें कि आपसे सेमेस्टर से ऊपर लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। Then after that second year onwards, when you will be having digital logic, data structure and COA and all, then you will start preparing those courses. All the first year students, okay, so I am right now having on the last question, sir question is important or revision is important, ऋषभ both are important, दोनों जरूरी है, एकदम जरूरी है दोनों। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब तक आपको कंटेंट का नॉलेज नहीं होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। और सिर्फ कंटेंट का नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग भी की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो एक अच्छा प्रॉपर बैलेंस बना के रखें, पहले रिवीजन करें और क्वेश्चन भी सॉल्व करें। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है क्वेश्चन की, आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड सब कुछ, तो अभी सिर्फ फिर कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको वेस्ट ना हो टाइम। जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए क्वेश्चन उन्हें सॉल्व ना करें, फिर टेस्ट सीरीज लिखें, ज्यादा अच्छा होगा। बट दोनों का अच्छा प्रॉपर मिक्स, प्रॉपर बैलेंस ज्यादा सही रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। आज कोई क्लास नहीं है मेरी, जी नहीं, आज मेरी क्लास नहीं है। आई वांटेड टू हैव दिस पर्टिकुलर सेशन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर एक ऐसा सेशन रखें, आस्क मी एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में। तो सोचा कि पहले ये आपको क्लैरिटी दे देता हूं, आप 2 दिन आराम से लें और अपने प्रिपरेशन प्लान को अच्छे से रेडी करें, एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स वी विल अगेन हैव द क्लासेस। YouTube पे कल सुबह मेरा एक क्लास जरूर रहेगा। जितने भी YouTube की प्लेलिस्ट के मेरे जीपीकेज हैं वो सारे एक सेशन में मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, इफ आई विल बी एबल टू डू ऑल इन सिंगल। बहुत सारे जीपीकेज ऐसे हैं जिनके आंसर्स लोगों से बनते नहीं है और लोगों को मिल नहीं रहे हैं क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करें। सो ऑल दोज जिन्हें जीपीके नहीं पता है उन्हें बता दूं, घर पे करो प्रॉब्लम। सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन फॉर होमवर्क, ऑल दोस क्वेश्चंस टुमारो आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑन YouTube live along with you guys. How to prepare for verbal reasoning? For that we have started a specific class 12 PM daily on the same channel. Meeta ma'am will take those classes. आप उनकी क्लासेस अटेंड करें, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको एक लेक्चर उसमें मिल जाएगा। एक लेक्चर आज भी होगा उनका 2 आवर्स का, मे बी 1 आवर का, आप देखिए जरूर। 12 to 1 और 1:30 उनका डेली सेशन रहेगा और आप उसको लाइव सुन के और वर्बल रीजनिंग को इंप्रूव कर सकते हो। What is the success formula for which suggests for GATE 22 aspirant? सक्सेस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कुछ नहीं होता है सर, बहुत सारी चीजें होती है। सिलेबस कवर करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना है, उसकी डिटेल हर एक चीज याद रखनी है, रिवीजन अच्छे से करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करना है, प्लस पजल भी सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत कुछ है गेट के लिए। What should I focus more?
I need full third year BCA syllabus and study material. Where can I get online for free? जो कोर्सेस आपके BCA थर्ड ईयर के हमारे सब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पढ़ाए हैं उससे मैच करते हैं, तो आपको यहाँ हमारी तरफ से उसके क्लासरूम्स, उसके YouTube वीडियोस और उसके PDF भी मिल जाएंगे। तो एक बार मैप कीजिए कौन कौन से कोर्सेस आपके पास हैं, आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वो सारे PDF जो हम लाइव पढ़ाते हैं उनके। While learning C programming, why we did not get a practical knowledge and tips to improve C programming? Nasir, it's very simple thing that when you learn C programming, you need to select an educator who can teach you both. If you are having the classes for GATE, there we will not be able to teach you the practical knowledge. If you are learning C programming language as learning the programming, in that particular case you will be learning both. So just select a particular classroom which is more on the practical session. Definitely you will have better idea of that. Yes, Tirth, your question is answered. Thank you so much, Rishabh. Thank you so much. Enjoy the learning. Keep your learning happy. How to handle failures? Failures are the part of hard work. अगर आप फेल होंगे तो आप वहां से सीखेंगे और उस सीख को आपको कन्वर्ट करना है आपके जीत में. If you face failure, you will be going towards two direction. Either you will go down or you will go definitely too much up. तो अगर आप अदर साइड अप तरफ जा सकते हैं उन फेलियर से, तो डेफिनेटली यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम योर फेलियर्स. आपको डरना नहीं है, जो कोशिश करते हैं उन्हें फेलियर डेफिनेटली मिलता है लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा कुछ भी. तो आप डरे ना फेलियर से. छोटी छोटी जंग अगर हार जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरी जंग जीत जाओगे तो बहुत अच्छी बात है. तो छोटे छोटे हो सकता है, छोटे छोटे बैटल्स आप हार जाएं, बट फाइनल वॉर आपको जीतना ही है. और उस वॉर के लिए छोटे मोटे बैटल्स अगर आप हारते हैं तो वहां से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. Shubham sir, CEO always gives me headache, but after learn from sir, you become my favorite. Thank you so much, Shubham. Please refer all of your friends also, that they also can refer this particular course so that they also feel the same. Okay, उत्कर्ष, आपका मैं क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं. तीर्थ, कोई बेनिफिट खास नहीं है. अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लोगों को सेम मार्क्स और सेम एवरेज आते हैं तो फिर आपका कट ऑफ भी बराबर आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Should we avoid MSQ in first round? No ऋषभ, ऐसा जरूरी नहीं है कि MSQ आप अवॉइड करेंगे. MSQ आप सॉल्व भी कर सकते हैं. अगर आपको सारे पॉइंट्स के बारे में सब कुछ पता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो. आपको अवॉइड सिर्फ वो क्वेश्चन को करना है जिनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मोर देन 5 मिनट्स लगते हैं पहले अटेम्प्ट में. सिर्फ वही क्वेश्चन अवॉइड करें जिनको 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे सॉल्व करने में एक बार में. अदरवाइज यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड. डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा. आई विल टेक द क्लासेस मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक एंड मोस्टली वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स टिल मंडे टू फ्राइडे. ये नीट बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल. तो सिलेबस तो आपको अपने यूनिवर्सिटी से मिलेगा उत्कर्ष, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे. कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ में अलग हैं. तो एक बार मैप करके देखिए कि उनमें से कौन कौन से मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच नसीर. 7 सब्जेक्ट्स हुए हैं, क्या मुझे अभी और सब्जेक्ट्स करने चाहिए या इनको स्ट्रॉन्ग करूं और अच्छे से? आई एम इन थर्ड ईयर. ओके, सो दरब अहमद खान, आप एक काम कर सकते हैं, जो 7 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो चुके हैं उनका रिवीजन आप कंटिन्यू रखिए और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक ले लो जो इजी है समझने के लिए, याद रखने के लिए और जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. जैसे अगर सीएन कंप्यूटर नेटवर्क आपका बचा हुआ है तो मैं बोलूंगा कंप्यूटर नेटवर्क से आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता भी है और इजी भी टॉपिक है. एक दिन में कवर हो जाएगा आराम से और याद भी रह जाएगा. तो कुछ ऐसे सब टॉपिक्स थोड़ा 30% 40% डे टाइम में आप कर सकते हो और बचा हुआ टाइम 7 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में कर सकते हो.
रोड मैप विच इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड और वेब डेवलपमेंट फॉर ओपन सोर्स। तो ये जो चीजें मैं एक अलग सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं वेब सिक्योरिटी में, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं एथिकल हैकिंग वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं डेटा साइंस में, तो इन सब के लिए अलग अलग से मैं एक काम करूंगा, आपके लिए पूरा एक सेशन प्लान करके लेके आऊंगा। उस सेशन में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनको टारगेट कर सकते हो, कैसे कहां से किस सोर्स से आप लर्न कर सकते हो चीजों को। ठीक है। हाउ वी प्रिपेयर एप्टीट्यूड ऋषभ? एप्टीट्यूड अगेन हमारे अभी चैनल पे अभी में ही स्टार्ट हुआ है एप्टीट्यूड का कोर्स, मीता मैम ले रही हैं, आप देख लीजिए। अनअकैडमी के आप प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग श्रेनिक जैन सर, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्रीली आपको एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं। आप जाके देखिए एक बार। अगर आप पहली बार यूजर हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के, तो आप यूज करें विदीप 10 कोड, सो दैट आपको फ्री कंटेंट एटलीस्ट अनलॉक हो जाए। Sir, Unacademy test series according to MSQ pattern, what will be benefit? आपको कोई भी टेस्ट सीरीज जिनमें एमएसक्यू आ रहे हैं वो सॉल्व कीजिए। आप कुछ एमएसक्यू सॉल्व करेंगे, आपको हेल्पफुल होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको सीओए के एमएसक्यू चाहिए तो मैंने इसी चैनल पे 60 क्वेश्चन का एक सिंगल सेशन लिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमएसक्यू सॉल्व किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एमएसक्यू। आप वहां जाके देख सकते हैं, आपको बहुत 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 कुछ लर्निंग मिलेगी। 60 क्वेश्चंस एमएसक्यू के इस पर्टिकुलर चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सीओए के मैंने यहीं पे सॉल्व किए हुए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आशीष का क्वेश्चन है, सर आई एम इन सेकेंड ईयर एंड वांट टू क्लियर माय गेट इन थर्ड ईयर। आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन बट समटाइम्स आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच नेक्स्ट। Ashish, it's very simple thing. If you are learning from free sources, that's the problem you will face entire your duration. During entire your duration, that what to do next, how to do next, if I am preparing correctly or not, my preparation going in correct direction or not. ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको ट्रबल करेंगे ही करेंगे। There are two options you have is either you try to find solution by yourself, कि अब नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा कोर्स पढ़ूं, कौन सा नहीं पढ़ूं, जस्ट बिकॉज देर आर सो मेनी ओपन सोर्सेस। आपको बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, मैं कभी कभी हेल्प कर दूंगा, मेरे टीम मेंबर्स हेल्प कर देंगे, बट हर बार आपको हेल्प मिलेगी फ्री सोर्सेस से। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या करना है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। अगर आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई गाइडेड स्टडी ज्वाइन करो। आप अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें आपको मिलेगा गाइडेड स्टडी जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी आपकी गेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। डेफिनेटली हेल्प करते हैं गाइडेड स्टडी, क्योंकि आपके एफर्ट्स जो हैं वो कम एफर्ट्स में आप ज्यादा मार्क्स करने की एबिलिटी ला सकते हैं अगर आप एक्चुअली गाइडेड स्टडी लेने जाते हैं। दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स यू आर गोइंग टू डू विच कैन रिटर्न यू अ लॉट। अगर आप सोचते हैं कि हम फ्री में ही कर लेंगे, फ्री में करने वाले कितने ऐसे लोग होंगे जो प्रिपरेशन करते हैं बट कितने उनमें से हाईएस्ट रैंक ला सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज देयर बट वेरी लेस। तो आप कोशिश करें गाइडेड स्टडी करें ताकि आपको एक्चुअली ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जो सीओए का कंटेंट दिया है वो सफिशिएंट है यूट्यूब पे, नो नीड टू लुक एट द टेक्स्ट बुक्स। अगर आपको हर चीज समझ में आई है एक एक लेक्चर की तो टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव कर दो और आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे गेट एग्जाम और हर एक टेस्ट सीरीज में। डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉलेज एग्जाम थर्ड सेम प्रिपरेशन, समर्थ कुमार गुप्ता। डेटा स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिंक लिस्ट से आ सकते हैं, स्टैक से आ सकते हैं, ट्री से आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सेमेस्टर के। एक काम करता हूं मैं, एक सेशन बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो सारे क्वेश्चन की लिस्ट और फिर उनको मैप कर दूंगा अपने लेक्चर्स पे ताकि आपको दोनों लर्निंग अच्छे से हो जाए। डीबीएमएस का कोर्स भी हम जल्दी लेके आएंगे। हमारे सर अंकुश सकलेचा सर ऑलरेडी डीबीएमएस पढ़ा रहे हैं। जी हां, अनअकैडमी के फ्री क्लासेस में वो डीबीएमएस पढ़ा रहे हैं। आप एक काम करो, unacademy.com पे जाओ या अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाओ और अंकुश सकलेचा सर को सर्च करो। वो फ्री में डीबीएमएस पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे, चेकआउट है।
How can we increase speed in solving MCQs, both problem and theory? Ammu, it's very simple thing. If you are good enough in technical knowledge, you can increase the speed. If you don't remember the concepts, you try to understand first what is the question. After that, you take time to recall the topic, and that is what the speed is less. That is where the speed is less. To improve the speed, you can quickly, first you should have the understanding of the question, understanding the topic, and you should have the ability to recall the subjects which you studied, so that you can increase the speed. That's great, that's great. Which book best for competitive programming? For competitive programming, I guess better than the books, you should go with the some kind of guided video lectures. On Unacademy's platform, you can go to CodeChef. Over CodeChef, you can learn a lot for the competitive programming. Take the basic knowledge of data structure, then after that improve your programming skills using the competitive programming classes. Instead of books, better it is that you go with the guided video classes. COA is still pending. Should I start now? Raj, you can cover two topics, cache memory and pipelining first. After that, if you have time and bandwidth, you can take remaining topics like IO organization, like instructions, addressing modes, and so on. But first, you go with these two topics, cache memory and pipeline, just because maximum questions will be taken from these two subjects. नीलिट की प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही तो कोर्सेज पढ़ना है, जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वही कोर्सेज आएंगे. आप एक बार सारे सिलेबस का एक एक प्लेलिस्ट मैप कर लो. वी हैव सो मेनी प्लेलिस्ट ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स हियर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. गो फॉर इट. एक बार आराम से पढ़ लीजिए. सारे सब्जेक्ट्स जो नीलिट के हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ कवर करवा रहे हैं. कुछ सब्जेक्ट अगर छूटे होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जब नीलिट का एग्जाम आए उसके आसपास कहीं एक महीना या हाफ महीने की एक नई प्लेलिस्ट बना के और आपको दे दी जाए. Definitely, Samarth, I will try to make that particular thing as soon as possible for COA and data structure both. एल्गो की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें? पहले आप डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ो. अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से हो गया है तो एल्गोरिदम के लिए इसी चैनल पे मॉर्निंग 10 AM से क्लासेस लग रही हैं. अंकुश सकलेचा सर की, ही इज टीचिंग यू एल्गोरिदम. एडा की क्लासेस लग रही है मॉर्निंग में 10 AM ऑनवर्ड्स, मंडे टू फ्राइडे. आप वो क्लासेस अटेंड करो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा एल्गोरिदम को कैसे कवर करेंगे. सर अनअकैडमी ने कोडशेफ को एक्वायर कर लिया है, और आप एक बार जाके अनअकैडमी के साइट पे आप एक काम कीजिए, कोडशेफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कैटेगरी को सिलेक्ट करो. आपको वहां पे स्पेशल फ्री क्लासेस मिल जाएंगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स की तरफ से, फ्री में. जी हां. चलिए, तो आई गेस दैट इज इनफ फॉर द डे. डेफिनेटली एक ऐसा सेशन और कुछ दिन में वापस ले आऊंगा आपके लिए, सो दैट यू कैन हैव मोर लर्निंग एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. जो आपकी मन में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाए, उनके लिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर. The members who don't know about this particular channel and this particular channel's work, then please check out the channel and its playlist. I have taken so many courses on this particular channel, and I am leading a particular team which is taking lot of courses on this particular channel for your semester exam, placements, gate, and so on. Just check out, share these lectures with all of your friends. Like the video अगर आपने like नहीं किया है वीडियो को तो share the playlist, channel and the lectures with all of your friends. Subscribe the channel if you haven't done, and notification you turn on so that you will be getting the notification every time when I come for the class. Keep learning happily. We will try to make your learning happy. Thank you so much for joining here. Have a nice remaining day. Bye bye.